So now we'll know that if we move upward, 10 numbers will increase. If we move downward, 10 numbers कम होते जाएंगे. If we move towards right, एक एक नंबर बढ़ता जाएगा. और अगर हम लेफ़्ट की तरफ आते हैं तो एक एक नंबर कम होता जाएगा. तो चलिए इस ग्रिड की हेल्प से हम कुछ सम्स करते हैं. द फर्स्ट वन इज़ 4 + 10, यानी 4 में 10 ऐड करना है. वेयर इज़ द 4? लोकेट 4, इट इज़ हियर. और हमें मालूम है कि अगर हम 10 नंबर प्लस करना चाहते हैं तो इस तरह से अगर हम काउंट करेंगे तो इट इज़ लॉन्ग मेथड. बट वी नो दैट द नंबर जस्ट अबव द गिवन नंबर इज़ 10 मोर देन दिस नंबर. हमने अभी पहले देखा था कि इसके ठीक ऊपर वाला नंबर कॉलम में इसे 10 ऐड करने से आता है. तो यानी 4 को अगर हम 10 ऐड करते हैं तो सीधे कहाँ पहुँचेंगे? 14 पर. सो योर आंसर विल बी 14. The next is 17 + 20. Where is 17? Here it is, 17. So 20, how many numbers will move upward? 2 times. 17 + 10 + 10. So 17 + 20 will give you 37. It is 37. Next is 35 + 12. Where is 35? Yes, it is here. And 12, we want to add 12 numbers. So 12 is made up of 10 + 2. So first we'll add 10 and then we'll add 2. So 35 + 10, 45. अब 45 में 2 और ऐड करने हैं तो कहाँ जाएंगे? आगे या पीछे? आगे, क्योंकि नंबर बढ़ रहा है. 35 + 10, 45. 45 में कितने और ऐड करने हैं? 2 ऐड करने हैं. सो 1 2. तो कहाँ पहुँचे हम? 47 पर. मीन्स 35 + 10, 45. +2, 47. It is here 47. In the same way, 26 + 14. Here it is 26. 14 means 10 + 14. 26 + 10, 36. 36 + 4, 1 2 3 4. It is 40. 32 + 45. Where is 32? Yes, it is here. 32 + 45 means 40 + 5. 4 numbers upward. So 1 2 3 4, 72. And then how many numbers we have to move in the right direction? 5 numbers. So 1 2 3 4, 72. And then 1 2 3 4 5. So it is 77.